Greetings, students. I hope you're all doing well. Hi, this is Satyaki Chakraborty from Indraprastha Law College, Greater Noida, and today's topic of the day is Supreme Court, and the subject is legal and constitutional history, and this is meant for BL-LLB third sem students. Students, before discussing about Supreme Court, please do know that the Supreme Court that we are talking about here in this tutorial is nothing to do with the apex court of the country or the Supreme Court that was established in 1949. ठीक है, जो 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट, उससे जो सुप्रीम कोर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उनका कोई ताल्लुक है नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1774 में पास हुआ था उनके हिसाब से इस्टेब्लिश किया गया था. तो ट्यूटोरियल के अंदर ड्वेल डीप करने से पहले प्लीज़ लेट अस सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एट दैट वेरी पॉइंट इन टाइम. Clive had a decisive success in the Battle of Plassey, and the First East India Company became the supreme authority in Bengal. It kept the Nawab on the throne of Bengal, but he exercised limited powers. So आप लोग हिस्ट्री पढ़े ही होंगे. 1757 में लॉर्ड क्लाइव had taken Bengal with the Battle of Plassey. It was a very decisive battle, और वो लोग बंगाल को ब्रिटिश राज के अंडर ले लेते हैं और गवर्नेंस स्टार्ट होता है फुल फ्लेजेड. और उस टाइम पे बंगाल comprised of 4 states or 4 regions that were West Bengal, present Orissa, बिहार और बांग्लादेश को लेके बंगाल प्रोविंस होता था. और नवाब को थ्रोन में बिठाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द नवाब वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे और उनको लिमिटेड पावर दिया गया था. तो लिमिटेड पावर ऊपर से वो एडमिनिस्ट्रेशन भी चला नहीं पाते थे, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी काफ़ी रहा है क्योंकि बंगाल में फैमिन हो गया था, और फैमिन होने के कारण सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी दिखा गया था उस ज़माने में. तो अभी हम लोग देखेंगे कि 1774 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, और रेगुलेटिंग एक्ट पास होने से कारण सुप्रीम कोर्ट बनता है, वही हम देखेंगे. सो रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया एज वेल एज एट होम. तो रेगुलेटिंग एक्ट किस कारण पास होता है कि बेटर मैनेजमेंट हो, गवर्नेंस को प्रॉपर वे से चलाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली रन किया जाए, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इंग्लैंड में भी. सो द एम वॉज टू प्रिवेंट पर्टिकुलरली वेरियस अब्यूजेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो अब्यूज़ गवर्नमेंट करते थे और जो करप्शन रहा है, जो प्रॉब्लम्स रहा है, वो ना रहे. इसी कारण रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था कि इफेक्टिव मशीनरी बना रहे और इफेक्टिवली और प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन चले. सो द एक्ट एम्पावर्ड द क्राउन इन इंग्लैंड टू एस्टैब्लिश by charter of later patent a Supreme Court of Judicature at Calcutta consisting of Chief Justice and 3 other judges. Judges were appointed by the Crown itself. So the act had empowered the Crown. और Crown मतलब हम यहाँ पे इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, किंग की बात कर रहे हैं, जिन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट के बलबूते पे एक चार्टर इस्टेब्लिश किया था जिसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिकेचर इस्टेब्लिश हुआ था. और एक सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस. और जो जज का अपॉइंटमेंट क्राउन करते थे, एंड ऑल दिस जजेस हु अपॉइंटेड बाय द क्राउन इटसेल्फ वे बैरिस्टर्स. और टेन्योर जो था वो था 5 साल के लिए. Supreme Court was to have power to exercise all civil, criminal, admiralty and ecclesiastical jurisdiction. The jurisdiction of the court was to extend to all British subjects residing in Bengal and Orissa. The court was not competent to hear and determine indictment against the Governor General and the councillors except for treason and felony. So, Supreme Court had jurisdiction over every domains of law, be it civil, be it criminal, admiralty or ecclesiastical jurisdiction. एडमिरल्टी मतलब सी लॉज, जो लॉज सी में प्रिवेल होते थे, क्योंकि उस ज़माने में जहाज़ यूज़ किया जाता था. सो देवर सी लॉज वे वेरी प्रेवलेंट. एंड एक्लेसिस्टिकल के मतलब रिलीजियस लॉज. ऑलराइट. सो सुप्रीम कोर्ट हैड द जुरिसडिक्शन over the courts, and the court was to extend to all British subjects residing in Bengal and Orissa. एंड सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू हियर. उनके पास वो कॉम्पिटेंस था नहीं कि वो गवर्नर जनरल या फिर काउंसिलर्स के अगेंस्ट कुछ कर सके, और वो जुरिसडिक्शन था ही नहीं, एक्सेप्ट अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन बने जैसे ट्रीजन या फेलनी,
तभी वो गवर्नर जनरल या फिर काउंसिलर के अगेंस्ट स्टेप ले पाते थे, नहीं तो उनके पास वो पावर नहीं था. Supreme Court was to be a court of equity in the English legal sense of the word. It was given full power to administer justice in according to the rules and proceedings of High Court of Chancery in Great Britain. So, Supreme Court was established with the total emphasization that it will be a court of conscience, a court of equity. Proper justice should be meted out, and all the rules and proceedings that was followed in the High Court of Chancery in Great Britain, the Supreme Court in the similar manner had to function in accordance to the High Court of Chancery in Great Britain. So this was the main ways and means of the administration. Now let us see the defects of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट तो इस्टेब्लिश हुआ था जो काफ़ी चेंजेस लाया था in the domains of law, because Supreme Court had a proper hold on every domains of law, be it criminal, civil, admiralty or religious or ecclesiastical jurisdiction. और एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म में भी काफ़ी एम्पावरमेंट आया था और प्रॉपरली वो रन भी कर रहे थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट काफ़ी प्रॉब्लम्स सुप्रीम कोर्ट को झेलना पड़ता था. सो लेट अस लुक एट द डिफेक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फर्स्टली, vagueness and serious omission of law to be applied created serious consequences. What law was the Supreme Court to administer? The Regulating Act 1773 was silent. Apparently, it was the English law which was insular, technical, formless, tempered in its application to English circumstances only. सबसे पहले जो shortcoming था, it was all about vagueness and serious omission of law. कौन सी लॉ कहाँ पे अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, ये वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा नहीं गया था, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता था. और इंग्लिश लॉज जो सुप्रीम कोर्ट में चलता था, दोज वर वेरी इम्प्रॉपर, फॉर्मलेस एंड इंसुलर इन नेचर. उनका एप्लीकेशन खाली इंग्लिश सर्कमस्टेंसेस में ही होता था. दे हैड एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट एंड दे वांटेड द सुप्रीम कोर्ट टू रन इन अकॉर्डेंस टू द हायर कोर्ट्स, दैट in a similar fashion, in the similar way और the similar technique जो ब्रिटेन में चलता था. बट वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस अलग था और इंडिया में सर्कमस्टेंसेस अलग था. तो वो जो लॉ ब्रिटेन में इम्प्लीमेंट होते थे, दैट वाज नॉट पॉसिबल टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर द इंडियन सर्कमस्टेंसेस. सो एंड ऊपर से लॉज वर वेरी कन्फ्यूजिव इन नेचर. इट वॉज वेरी वेग, इट वॉज वेरी एम्बिगुअस, तो वो समझ में नहीं आता था. और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज प्रीटी साइलेंट अबाउट इट. वो प्रॉपरली ये वेगनेस होने के कारण, कन्फ्यूजन अराइज होने के कारण और ये इंडियन सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई करने में जो प्रॉब्लम हो रहा था, इनके कारण इट वाज नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन नेचर. सेकेंडली, टू whom was that law to be applied? To British subject and to the person in the employment of the company. But the point was by no means clear. ऊपर से और भी कन्फ्यूजन होता था कि वो किसके ऊपर अप्लाई होगा जो लॉ सुप्रीम कोर्ट में चलते थे, whether it is to be applied on the British subject or on the person in the employment of the company. So it was also not clarified in nature. तो क्लैरिटी का भी एक प्रॉब्लम रहा है. Thirdly, all this gave rise to conflicts between Supreme Court and the Supreme Council or the Supreme Government. तो ये confusion होने के कारण, because of the unclarified laws and the confusion or vagueness के कारण, there was a conflict arose between the Supreme Court and the Supreme Council or the government itself. Then what we tend to see is, it was also not made clear whether the company in its Diwani capacity was subject to the jurisdiction of Supreme Court. The company considered itself immune from the jurisdiction, but the Supreme Court held that it had jurisdiction. This led to complicated issues and problems. और भी एक प्रॉब्लम होता था, जो गवर्नेंस होते थे या फिर जो सुप्रीम काउंसिल होते थे, ये अपने को इम्यून सोचते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट मानते थे कि द गवर्नमेंट ऑफ द सुप्रीम काउंसिल उनके जुरिस्डिक्शन में आएगा. तो ये लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम होता था. देयर वाज अ टसल और कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर or conflict of interest, and since the government or the government council always thought
that the Diwani capacity or the revenue capacity or everything that has to be everything that is connected to the tax collection was all subject of the Supreme Council. It was not subject of the Supreme Court. But Supreme Court at very point in time always thought that this revenue council or the Supreme Council all came under its jurisdiction. But on the other hand, the Supreme Council or the revenue capacity, they did not think so in that manner. So ये जो power of conflict होता था, ये tussle होता था, इसको लेके भी काफ़ी confusion रहा है और cases काफ़ी complicated होता गया. Then we tend to see that जो जमींदार होते थे जिनको सुप्रीम काउंसिल ने पावर दिया है, इवन दे थॉट देमसेल्व्स टू बी immune from the Supreme Court's jurisdiction, and this also led to a serious litigation. So it was not clear whether the jamindars who collected revenue were the servants of the company or not. The Supreme Council held that they were immune of Supreme Court's jurisdiction, और इसको लेके भी काफ़ी serious litigation हुआ है. Supreme Court followed its own procedure in administering criminal laws. Many offences were punishable with death. This was oppressive as there was no promulgation of the law. And so Supreme Court's motive towards jurisdiction was very extreme. There were most of the offences or most of the cases that was dealt by Supreme Court was, dealt with very regressive manner, very oppressive manner, because many offences were punishable with death. तो ये भी एक कारण था सुप्रीम कोर्ट जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट एबॉलिश हो गए. Lastly, there was such disharmony between the Governor General in the Council and the Supreme Court. The Supreme Court had no jurisdiction to hear indictment of the Governor General. So there was this confusion, this conflict of power, conflict of interest, this vagueness. ऊपर से इतना loggerheads. This brought a disharmony. ये जो एक दो बॉडी, क्योंकि हम सुप्रीम काउंसिल की भी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं. सुप्रीम काउंसिल मतलब द बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द जुडिशियरी बॉडी. सो इनमें ना काफ़ी डिसहार्मनी रहा है, इनमें कोई पीस नहीं था, क्योंकि गवर्नर जनरल जो काउंसिल के पार्ट था और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता था. तो सुप्रीम कोर्ट हैड नो इंडाइटमेंट टू हियर अगेंस्ट द गवर्नर जनरल, और सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर नहीं था, वो कॉम्पिटेंस की नहीं था कि वो कोई इंडाइटमेंट सुन सके ऑफ द गवर्नर जनरल. सो दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस पावर स्ट्रगल and vagueness and confusive nature of the situation, at the end of the day disrupted the whole judiciary system. And finally what we tend to see is the Supreme Court tends to get abolished, because although it was established with the sole motive to bring an effective mechanism in the domains of judiciary in accordance to the Regulating Act, but at the end of the day all the defects that we right now discussed brought the downfall of the Supreme Court then at that very point in time. तो जिस हिसाब से हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था कि बेटा जुडिशरी रहे, बेटा एडमिनिस्टर हो, जुरिस्डिक्शन भी काफ़ी प्रॉपरली एडमिनिस्टर हो, लेकिन ये सब डिफेक्ट्स और शॉर्टकमिंग्स जो हम लोग ने अभी डिस्कस किए, दिस ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसलिए सुप्रीम कोर्ट एबॉलिश किया जाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है एट द एंड ऑफ द डे. सो thank you class. This will be for it today.